हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। व्हाट इज डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखते हैं क्या है। वन नेशन क्या है, वन इलेक्शन क्या है। लेट्स सी। तो क्या है? On September 1, the central government set up a panel headed by former President Ram Nath Kovind ji to explore the feasibility of one nation, one election plan. What is one nation, one election plan? ONOE. The idea of one nation, one election centers around the concept of synchronizing the timing of Lok Sabha and state assembly election across the state to reduce the frequency of poll throughout the currency. After the enforcement of the Constitution on January 26, 1950, the first ever general election to Lok Sabha and all the state assemblies were conducted simultaneously in 1951-1952. The practice continued into the three subsequent Lok Sabha elections until 1967, after which it was disrupted. The cycle was first broken in 1959 after the Centre invoked Article 356। ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल लगता है उस आर्टिकल में। उसको गवर्नमेंट गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो डिसमिस करके स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मतलब इनडायरेक्टली यही होता है कि सेंट्रल रूल आ जाता है। The cycle was first broken in 1959 after the center invoked Article 356 of the Constitution to dismiss the Kerala government, again, to dismiss the Kerala government subsequently due to defection and counter-defection between parties. Several legislative assemblies dissolved post-1960, which eventually led to separate polls for Lok Sabha and State Assembly. Okay. Currently, the assembly polls in the state of Arunachal Pradesh, Sikkim, Andhra Pradesh, and Orissa are held together with the Lok Sabha election. मतलब इतने स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा इलेक्शन के साथ हो रहे हैं। What do reports say about ONOE? One Nation, One Election. In August 2018, the Law Commission of India (LCI), chaired by Justice B.S. Chauhan, released a draft report on simultaneous election, wherein the constitutional and legal questions related to the issue were analyzed. Notably, the Commission submitted that simultaneous elections are not feasible within the existing framework of the Constitution. इस रिपोर्ट में बोला गया कि एक साथ feasible नहीं है। It said that the Constitution, the Representation of People Act 1951, the rules of procedure of Lok Sabha and State Assembly would require appropriate amendment to conduct simultaneous polls. The Commission also recommended it retrieve rectification from at least 50% of states. However, with respect to advantages of holding simultaneous polls, the Commission said that one nation, one election will lead to saving of people money, public money, reducing the strain on administrative setup, and security forces timely implementation of government policies. Just a second, sorry. And administrative focus on development activities rather than electioneering. Way back in 1999, the LCI क्या है? यहाँ पे आपको पता है तो किधर गया? हाँ, Law Commission of India, headed by Justice B.P. Jeevan Reddy, also advocated for simultaneous election. The foremost concern is with regards to its feasibility. Article 83(2) and 172 of Constitution stipulates that the tenure of Lok Sabha and state assemblies respectively will last for 5 years unless dissolved earlier, and there can be circumstances in Article 356 wherein the assembly can be dissolved earlier. तो ये प्रेसिडेंट रूल है। ये वाला आपके लोकसभा के लिए है, आर्टिकल 83 टू आर्टिकल 72 आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए।
और ये प्रेसिडेंट रूल है जहाँ पे पहले डिसमिस कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट बाय ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट. Therefore, the one nation, one election plan raises serious question. What would happen if the central or state government collapses? Mid tenure, मतलब बीच में ही collapse हो जाए. Would election be held again in every state or will the president's rule be imposed? Amending this constitution for such a significant change would not only necessitate extensive consideration of various situations and provisions, but would also set a concerning precedent for more constitutional amendments. Second, the idea of one nation, one election does not square with the concept of federalism, as it is established on the notion that the entire nation is one, contradicting the content of Article 1, which envisages India as union of states. Third, यहाँ पे सेकंड रीजन पता चला है हमें और यहाँ पे हमें थर्ड पता चल रहा है. The present form of recurrent election can be seen as beneficial in democracy as it allows voters to have their voices heard more frequently. जैसे कि अगर एक बार इलेक्शन हुआ 5 ईयर में तो हम 5 साल में एक ही बार अपना विल बता पाएंगे भाई हमें आपकी गवर्नमेंट पसंद है नहीं है. इससे हमें मोर फ्रिक्वेंटली जैसे जैसे बार बार इलेक्शन हो रहा है मैं पता बार बार बता सकते हैं नहीं आप ठीक नहीं हो. ओके इसका ये मतलब हुआ beneficial in a democracy as it allow voters to have their voice heard more frequently. As the underlying issue of nation and state polls are different, the present framework prevents the blending of issues, ensuring greater accountability. The central government has also highlighted the substantial cost associated with frequent election. जितनी बार इलेक्शन होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना ज़्यादा पीपल मनी यूज हो रहा है, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट फंड यूज हो रहा है. However, this notion is misleading. In an article in the Hindu, the author contended whether the Election Commission expenditure of 8,000 crore over 5 years, amounting to 1,500 crore annually, or rupees 27 per vote per year, can be considered a massive expense for maintaining the pride of being the world's largest electoral democracy. Largest तो है, मैं आपको बता रहा हूँ, just a sec. लार्जेस्ट तो है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी है. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी. और जहाँ तक बात रही वन नेशन वन इलेक्शन में यही चीज़ है कि जैसे आर्टिकल 82 83 क्लॉज 2 हो गया, आर्टिकल 172 हो गया, आर्टिकल 356 हो गया. यहाँ पे लोकसभा के लिए, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल के लिए. अगर हम लोग इस आर्टिकल में सिंपली ये बता रहा है कि अगर जैसे कि हमने एक बार इलेक्शन करवा दिया और बाद में किसी रीज़न से अब प्रेसिडेंट रूल लग गया या किसी रीज़न से ये डिसॉल्व हो गया तो क्या उसके आगे वापस से बीच में इलेक्शन होगा टर्म के, जैसे टर्म है 5 ईयर बीच में हमने डिसॉल्व किया तो क्या फिर से इलेक्शन होगा कि नहीं होगा कि वहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे. ये सारे कुछ इशू है जिसमें अमेंडमेंट्स लगेंगे. तो एक ग्रुप है जो कह देते हैं कि मत करो जैसे चल रहा है ठीक है, एक ग्रुप ऑब्वियसली कह दे रहे हैं कि भाई करो क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा लग रहा है. तो फिर दूसरा ग्रुप ये काउंटर दे रहा है भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है तो इतना पैसा लगना भी बनता है. तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए. आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए. एंड इस आर्टिकल में ये तीन ये जो तीन आर्टिकल्स मैंने बताए हैं 83 क्लॉज 2 172 356 इसके बारे में प्लीज़ पढ़िएगा. एंड इलेक्शन कमीशन के रूल्स क्या होंगे, इलेक्शन कैसे हेल्ड होते हैं, टर्म क्या होता है लोकसभा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, आर्टिकल 356 क्यों लगता है मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, एंड लॉ कमीशन क्या होता है इंडिया का. And thank you guys. Work hard and work hard just to achieve your dreams. And thank you. All the best.